स्पॉइलर फुल हो सके वो। यार लास्ट ऑफ स्पॉइलरफुल। अस का तो तू निकल ज्यादा जाना, लंबा लास्ट एपिसोड नहीं 20 मिनट होगा। में तू निकल जाना। अरे नहीं, बैठना हाँ अब। बट लास्ट ऑफ अस इतना अबे नहीं, मतलब। उसको स्पॉइलर नहीं चाहिए ना हिमांशु, तो वी कैन लास्ट भाई के मैं 10 मिनट में भरत जाके अपने लिए ड्रिंक बना सकता है। यार कितना टाइम हो गया तुम लोग को ड्रिंक ओके, किए वे हुए? आर लाइव। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत टाइम हो गया ड्रिंक मुझे किए। भी ड्रिंक करने का बहुत मन कर रहा है एक्चुअली। लास्ट कब किया था तुम दोनों ने? मैंने परसों 10 साल। आई डोंट रिमेम्बर ओनली। फिर भी मन कर रहा है यार, उसने क्या आता है। हम्म, ड्रिंक करने का एक्चुअली बहुत बार मन होता है, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आज मैं दुलाली भी गया लेकिन ड्रिंक नहीं किया, सोच। तू दुलाली बैठा हुआ था आज? यार मेरी मीटिंग, मतलब मीटिंग क्या कहूँ, एक राइटर के साथ ही मीटिंग थी, लिख रहे थे हम लोग साथ में तो। हम्म। पर ड्रिंक नहीं किया? नहीं भाई, मैं इतना अपने आप को होल्ड किया हूँ, मतलब सोच। फक। वाह भरत, तूने डे ड्रिंक नहीं किया। हाँ। तूने काम को काम लिया अपना। हाँ वही। तो गुड, ये गुड थिंग। प्रोफेशनल होने का ना यही प्रॉब्लम है, इंसान मजे नहीं कर पाता। There are 0 people watching. There's गुड, one person. Oh no, Mr. Pink is there. जस्ट लाइक He गुड said ओल्ड hi. डेज। Just like the good old days. 2 people. Okay. ये हम लोग actually I don't know why the fuck we stopped sharing this on Instagram. हिमांशु तेरे पास है ना Instagram का हाँ, मैं फोटो लिंक? डालता हूँ रोज। लिंक फोटो डाल और लिंक डाल, ठीक है? लिंक डाल दे, तब तक हम लोग टाइम पास कुछ करते हैं इधर। यूट्यूब का लिंक मेरे को ढूंढ के निकालेगा तो मैं उसमें से। थंबनेल है एक, वो डाल दे, मैं तेरे को भेजता हूँ थंबनेल। रुक, मैं कर रहा तेरे हूँ। पास होगी थंबनेल, मैं डिस्कॉन्टेंट के व्हाट्सएप पे भेजी थी। Anyway, uh all right, 6 people watching. हेलो। How does it feel to lose Hotstar HBO in the next what 10 days or so, 10 or 15 days? So, congrats. Bharat, do you watch a lot of HBO content on Hotstar? आई आई ओनली वॉच द, मैंने सोप्रानोस फॉर एग्जांपल चालू किया है। अभी चालू किया? मतलब यार मैं बीच वो ऐसा सोप्रानोस का कि ऐसे कंफर्ट वॉच टाइप का है, बिकॉज इट्स लाइक एज यू सेड कि इट्स लाइक अ एक्सटेंडेड स्कॉर्सेसी मूवी, राइट? हाँ. तो आई लाइक टू कीप कमिंग बैक टू इट। 4-5 अभी एपिसोड हुए हैं। Dude, by the way, random this thing, but you know, Scorsese had given a like a random sly comment on Sopranos, which was Yeah. basically he said he couldn't relate with it Oh, because like he grew up, like the image of a gangster is very much like from when he grew up in the 70s or 60s or whatever. So okay. in his head it's very different. And he said that he loves Curb Your Enthusiasm and he thinks that is the Oh, peak TV. And I tend to agree with him actually. अच्छा, I Scorsese love likes Curb. this one. He's been on Curb Your Enthusiasm in like a Oh, cameo and stuff. he So also recently praised Derry Girls, ना? तो पागल हो गए he थे लोग। did. He did. So yeah. Oh, Mr. Pink has just said I'm addicted to Curb Your Enthusiasm. Who's gonna score it for me? Dude, Curb Your Enthusiasm is the best show ever. And I've been literally watching it all, like I keep rewatching it again and again. And I'm also like trying to write something that is a little similar to Curb and Uh, failing at it. But it's it's such a high standard of comedy because it's equal parts like absurd comedy and also like dark, but also like really stupid, silly gags. Matlab, it's a mix of all of these, which is rare. Uh, and yeah, today's topic, this is episode 93 of the Discontent Podcast. I'm Aditya Khanna, with me are Bharat Misra hello. and Himanshu Arya. हाय गाइस। And we are going to talk about The Last of Us. We're going to banter about the Oscars in general, bitch about some, praise others, and complain and cry about others. And we're going to talk about Lijo Jose Pelliceri's filmography as much as we can cover in this episode. Maybe we can go in the reverse order. Maybe we can start with Oscars first. What do you guys think? Yeah, sure, we can do that. Get the easy one out of it. Yeah, so basically all that breeds Natu Natu from RRR and Elephant Whisperers, the documentary short, were nominated for the Oscars from India, of course, and in various categories. And Natu Natu and Elephant Whisperers ended up winning the categories. All that breeds did not win in its category. I actually saw that film recently using illegal means because I would have loved to catch a screening of it, but मैं बॉम्बे में नहीं था तब. So भाई वो स्क्रीनिंग ना लिटरली हाँ.
10 जैसा मामी में होता है ना, हाँ. लाइक इट लिटरली फ्लू ऑफ द चार्ट्स, लाइक मतलब 10 मिनट में, दस Oh. मिनट में हाँ खत्म, गायब। हाँ, तो मैं वेट नहीं करने वाला था कभी, मतलब इधर रिलीज होगी या क्या होगा. सो आई सॉ द फिल्म एंड आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली amazing film, to be honest. I mean, I have not felt this emotional after a documentary, which doesn't even, try to pull on your heartstrings or something like that. It's not trying to do that. It's not even making you think that the subjects are, like, oh, bichare, Yeah. dekho. Like, even though the subjects of the documentary are going through a lot of tough times, at no point are you made to feel that you're supposed to feel bad for them. And they're going through like harrowing. I was hoping the two of you would have seen it by now, but you guys haven't, so I can't say much about it. But I will say that in terms of shooting a documentary, this is really peak cinema at this point. I feel all that breeze me, in the beginning there are like moments which you might feel like these are a little contrived, कि ये बंदे को बोला है कि तू ये बोलना और ये चीज डिस्कस करना है. And as the film moves forward, you realize that that is not the case actually, and that this person has probably spent so much time with them that organically these moments have come up. Because some of it is like, कि वो there's a family talking through like a door, अंदर बात कर रहे हैं और ये बाहर कैमरा लगा हुआ है. I actually felt like that was the camera was just left over there. And there are moments in uh, there is voiceover, right, in the film. So at one point you think it's a voiceover, but the camera moves through the house and then it settles on the guy who's talking, so it wasn't a voiceover this time. Like, it's just like these little subtle things that the film has done. Shot, I mean, impeccable shooting. The sound design was great. Some of the shots are amazing. It makes some crazy philosophical arguments, some political arguments as well. Very, it is, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स तुम लोग familiar हो उससे, गेम ऑफ थ्रोन्स का द allegory is that कि the entire world is focusing on like petty trivial internal battles, when the real danger um are these white walkers or like global warming, like that's what so this film sort of tackles with that, very, with topics that are very close to home for all of us. And it's yeah, so that's all that breathes. I think it should have won for sure. I haven't seen the others, so I don't know, maybe the others are as good or better. बट नवाल्नी करके एक फिल्म को मिला, जो एलेक्सी नवाल्नी, अलेक्जेंडर नवाल्नी, जो भी वो रशिया ऑपोजिशन लीडर पे बेस्ड है, उसको मिला. रशिया में राहुल गांधी. रशिया का राहुल गांधी उसके ऊपर बेस्ड है. तो या, आई मीन, I loved all that breeze. I think anyone who gets a chance to watch it as soon as you can, with whatever means you might have to employ for the same, please do so. But let's go to the other two. नाटू नाटू पे तो क्या ही बोले, but पहले Elephant Whisperers की बात करें. Elephant Whisperers, we've had the writer of the film, the short doc, Garima, she was actually on our podcast. She was a junior of us from college, and now she's an Oscar winner. So congratulations to her, in case she's listening. But yeah, with that, I think Himanshu, you can start us off with what you thought of Elephant Whisperers. First of all, I like the way it's shot more than anything, because I am also like a big fan of the camera. I want to use, I like using like my camera as well, right? This is my studio, so I like to use Sony cameras, and this is this whole film has been shot on a Sony camera. So I feel like this kind of validates a DSLR filmmaker. It feels like you don't need the big guns, or you can kind of come up with these things with a decent sized budget or a minimal budget also. So it looks amazing. It looks great. That's the best part about it. I think matlab, before we started the episode, Bharat and I were talking, and so like you mentioned recently, right, Abhi, in this episode only, some parts felt like they were staged or they could have been staged. So with Elephant Whisperers, even I had that feeling, that for a 40 minute, it felt like they were kind of coming up with stuff to
put into the movie, and Yeah. things that were trying to pull at our emotional chords. So that was the only thing that I could, pinpoint. But apart from that, it did work for me. Like, I did get really emotional while watching it, and the music that they used, and I don't know, the elephant is very cute, so it worked for me. But Bharat, why don't you tell your opinion? No, I mean, I agree with you in the sense that it looks very good. It's very well, like a fly on the wall kind of a shooting style is good. But overall, it didn't work for me. Like, it didn't do anything for me. It had the emotional depth of a Nat Geo, like sort of a documentary where you follow a herd of elephants and all that. I mean, I'm not throwing any shade at Nat Geo, but ऐसे तो हर Nat Geo film को हाँ, but I know what you're saying. so वो मुझे लगा like yeah, it's like a very harmless piece of film जो बन गई बस. और I also felt it glosses over a lot of stuff. Like, it doesn't really talk about anything. It's like you look at, again, I'm not saying that everything should be looked at from a skeptical or like this like lens of socio-economic whatever, but it almost sort of, again, I'm wary of using these words, but it kind of simplifies the whole thing to be a very beautiful looking creature film. People who love their land, very basic. Yeah, like using these terms unironically, you know, how like somebody would exoticize a people or a You mean community. like a white person? If a white person came and shot Yeah. this, it would look kind of like this also. Yeah, I mean, oh, look at these beautiful people in touch with nature. So it kind of felt that way. I'm not saying that, you know, the filmmakers didn't try, but it does seem like they've worked hard because as Himanshu said, that they've almost blended with the surroundings. So like great work on shooting and getting the kind of shots that they've gotten. But overall, it didn't work much for me. I was waiting for it to sort of get over. Oh, So- damn. Oh, so But मेरी एक theory है इसमें कि हाँ, बताओ. why did All That Breathes not win and this one won? क्योंकि उनको था, देख, in a way RRR, All That Breathes and Elephant Whisperers are all essentially more or less about people Yeah. trying to conserve nature and Yeah. ठीक है ना? And they would have been like, यार, we only need one of these films to win. We can only इतना ही afford कर एक का गाना ले सकते हैं, सकते एक And को ये और All That Breathes नहीं जीती क्योंकि नवलनी उनको जितानी थी भाई. अभी उनका चल रहा है, वॉर चल रहा है, हाँ, वो तो like a बात- literal war चल रहा है उनका. correct. तो उन्होंने कहा यार, Plus, हाँ, do you think All That Breathes thoda sa I haven't seen it, but do you think it's like critical of like the government? I don't know. Yeah, So do you think that's could be. like a maybe. thing? But you know that actually I have watched and I can see it in front of me right now because I was watching it before I started this podcast. So I am about 17 minutes into Elephant Whisperers, and I have pretty much the same opinion as Bharat. I wasn't gonna say much about the film because I had not finished it so far. So yeah, मतलब यार, अगर unless something crazy happens in the last 11 minutes, तो I also felt it was a fairly basic film. I thought it was, as what I was saying, it felt like a white person, which is ironic because there was such a big hoo-halla made about the diversity of the win, but it seemed like the most white person nature doc made in India. Because also maybe I'm being a little unfair because I'm coming off the back of watching All That Breathes last night, which I feel is like once in a generation kind of a documentary. And you know, with that doc, what Shaunak Sen has achieved is basically fuck the technicals of it and the absolute cinematic excellence that the film portrays. And not excellence matlab at a level where it is so carefully framed. Every pan is thought about, nothing is done just because it's supposed to be serviceable, you know. It's all, there is some thought process behind everything. And with that, he also gives a very specific kind of issues of relating to all our lives. It's as much a city about Delhi. All the shots of the city are in a way that is the entire trash and the
the waste of Delhi is in the Ah. foreground and the city itself is in the background Ah. constantly. There is an ominous feeling about the end of the film also, because I'm not spoiling it, it's not a spoiler, just into what made me feel, it is that what the film is constantly asking you, what is the world going to look like in 15 years? And it's a desperate kind of a it's a very subtly violent cry for help kind of a film, I feel. There is a line in the film that is absolutely beautiful, which is ki we are not connected by religion or country or something. We are all a community of air, and which is why the name is also All That Breathes. Everybody, all of us, the only thing that connects us is air, because that is what all of us breathe. And that, like, it presents some great maturity in terms of documentary filmmaking. There are moments in it which are, which all of us will relate to. There are like moments that which you might like. There are two brothers, right? So the interactions that they're having, the interactions that the filmmaker has chosen to keep in the film, they're so pertinent. None of them are ham. None of them are saying exactly. Matlab, the voiceover doesn't feel overwhelming as it would have. I felt in the beginning I got a little scared कि ये voiceover थोड़ा अजीब जा रहा है, but man, I mean, after that, to watch Elephant Whisperers has been a disappointment for sure, because and I wish it wasn't. I mean, if you're but with that I can give one this thing to the makers of Elephant Whisperers is कि यार तुम लोग you're shooting in a village, in a tribal community. You are not from a tribal community, so it'll be harder for you to build a rapport, I'm assuming, with these people. Whereas Shaunak Sen with these guys, I mean, you'll watch the documentary, you can matlab, I feel like any of us, if we were the filmmaker, we could have also built a rapport with these guys. They're like very they seem like very, people who we would be used to, urban, very highly educated, perceptive, like in the sense of how urban people behave in certain contexts, which that cultural gap would be there. It's like the insider versus outsider perspective. Haan, No bhai. matter what. So the tribal people, like, they have been romanticized in the doc. It feels like, dekho kitna अच्छा. There's no like pollution, right? So there's no telephone poles, there is no wires, there is no cars. So there is no roads also. Most of the film doesn't have these kind of things. So it's actually like एकदम level 0 होता है ना जहाँ पे उधर का shooting है. Like, no, like, it doesn't look like this place is actually from India. मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं. And that is, I think the charm was there for that only, right? Like, that's the charm of that place. Yeah. But then it's so removed from everything else that, it's like dystopia at this point. अरे also just to add to what Khanna was saying, शौनक सेन की मैंने पुरानी फिल्म देखी है, सिटी ऑफ स्लीप. हाँ वो देखी थी मैंने. वो आई थिंक किसी तो फेस्टिवल या कहीं तो देखी थी मैंने, and that was very good. That again, it didn't have the kind of finesse that Khanna is talking about, which is that every pan and every frame is well thought out, because it was more, I would say, like DSLR shooting and more like hand kind of a thing. But it still had very haunting images. The subject is very interesting. It is about. What's it about? Yeah, it's based in Delhi. It's based in Delhi ke roads by night, and it's basically about the people of Delhi who sleep on the road, on the footpath. So it could have been very exploitative. It could have been all of those problematic things. But to me, it felt very. At least there was an attempt to sort of be one with them rather than looking at them. ये मुझे लगा था वो देख के. Again, I might have to revisit it. मैंने नहीं देखी काफी टाइम में, काफी कुछ साल पुरानी है, मतलब आई एम गेसिंग 2015-16 में आई होगी. तो वैसे टाइप की फिल्म. And I also think, sorry, it's also, I feel a good preparation for a filmmaker like, I'm assuming Shaunak Sen is, कि if you shot something like that also in the same city, and apparently they shot All That Breathes also over many years. So yeah. Do you think? Go on. ठीक है, continue. नहीं, go on. अरे मेरा बहुत different opinion. बोलना. It's not an opinion. It's like. बोल दे. I thought, Abhi, I just got an idea. Do you think so? I don't think documentaries get showcased in theaters, right? In India. Not like much. Nobody can go and buy a ticket for
this, but I thought this would be a good opportunity because there are two documentaries and they both are like popular, right? They got Yeah. like And they, they they both got relate to nominated. people who are working on nature and protecting Yeah. animals. Both of Huh. them literally have the same subject. I think it would be a great idea if these two could be released together like a double Yeah. feature. Because Hmm. then That'd it'll be- add up. मतलब वो timeline भी हो जाएगी ना, 2 घंटे की movie बन जाएगी, 2 घंटे का showcase हो जाएगा एक. And Um, it might, if you promote it with, you know, whatever, like on a nature's day, like World Nature Day होता है ना, वह उस type का, if you like World Wildlife Day, something like that, if you like put out these two Earth together, I Day. think Huh. that'll be a good idea. It could be done. Acha, I related to Himanshu's point actually. I wanted to say it was fucking enraging to see the credits of all that breeds and all the exec producers, all the producers, the cinematographer, all the main. Matlab wo, if you have worked on the film, that's a different thing. But I'm saying all the producers and all the backers, they're all white people. All of them are all of them are like not Indians. This is a film about the capital city of India, about two guys who are working on basically who are doing their like everything to protect Delhi basically, and they're fixing up kites. And by the way, they're the only ones fixing up kites yeah. in Delhi. So I mean, they're doing an insane. मतलब मेरे को इतना गुस्सा है ना क्रेडिट देखी, क्योंकि मैं वही सोचता हूँ यार, हम लोग अंधेरी में रहते हैं क्योंकि, और फिल्म्स की इतना इधर जो हवा बनाया हुआ है, मतलब इतने स्टूडियोज हैं, इतना वेब इंडस्ट्री है, इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं. Why, मतलब I'm just saying, why does a filmmaker like this has to go to HBO to get his film out there? And why is it that the entire world has seen the film except Yeah. the country that it belongs to? You know, what will it take for Indian production houses to climb out of their assholes and take that fake elitist position that they've all taken कि हम तो आर्ट सिनेमा वाले तो हमसे बुरी तरह बात करते हैं और आर्ट सिनेमा वाले से हम क्यों डील करें. I'm sure it's part of that same fucking hypocrisy. You want to make garbage films. You want to be recognized to make garbage films. You want your films to still go to the Oscars and try to win. Yeah. And in case one of your wins, and but you will not put your money where your mouth is and support the cinema that should be supported. I mean, it is actually insane that nobody would buy this film, give it a release run, give it a limited Yeah. release, give it an भाई, OTT release. I you know? also feel strongly about this क्योंकि भाई अभी मैंने एक हॉट टेक पढ़ा था कि ओ ऑफ कोर्स उन्होंने नाटू नाटू को जिताया क्योंकि वो दे आर वेस्टर्न पीपल एंड दे वांट टू सी इंडियंस एज लेस सोफिस्टिकेटेड. बट मैंने कहा भाई साहब, तो आप क्या समझते हैं? मतलब व्हाट आर द फिल्म्स दैट यू पे मनी फॉर, राइट? आपकी सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है भाई? पठान है, मतलब, एंड इतनी सोफिस्टिकेटेड है, मतलब, राइट? सो माय पॉइंट इज, आप खुद ही जब, एंड इफ यू लुक एट, ओके, there are art films that are being made which are fucking good, right? There is a Dui, there is a Pedro, these kind of films fucking nobody's heard of. तो तुम खुद ही साले खुद को sophisticated नहीं मानते तो तुम्हें दुनिया क्या मानेगी? So that's what I also feel. नहीं यार, I mean, Bharat, we work here. You know how people react. Like, हम लोग we were sharing a story once where you were telling me that you mentioned that Court is one of your favorite films, and the reaction that you get. Yeah, I was in like this writer's room kind of a place where I was writing, and everybody is like, ये देखो Court वाला ये आ गया. भाई मैं तो सो गया था देखते देखते. पागल है क्या? इसका रिकमेंडेशन कभी मत लेना. और ये लोग हम लोग को जज करते हैं कि तुम लोग DDLJ को हेट देते हो, तुम लोग ये फिल्म को हेट देते हो, तुम लोग बड़े कूल बनते हो. है, मैं तेरे से कूल हूँ, ठीक है, मैं तेरे से बहुत ज्यादा कूल हूँ, और तू कभी उतना कूल नहीं हो पाएगा, ठीक है, सच्ची में. मतलब I really feel like saying this to these people after watching the credits of all that, a film like All That Breathes, which is so rare. Somebody has taken something right in front of our eyes and turned it into such a great piece of cinema, and it doesn't get a release over here. And I am 100% sure it's got to do with this kind of an attitude. Even though Shaunak Sen I would imagine would have some level of access, considering his brother is now a screenwriter and earlier for a film critic. So I mean, it's मतलब own brother है क्या? Raja Sen, right? I think so. I think the real brother. Yeah. Anyway, with that rant out of the way, on All That Breathes, and yeah, but no, you know what? On Elephant Whisperers also, for all said and done, it does take a lot of, effort to kind of even get your films. At least see Guneet Monga and Sikhya, like the production house, they're at least consistently
making these Yeah. films, they're doing the right plays to make them reach the Oscars, Correct. whatever the PR play has to be. And I think we need to stop looking at the PR thing as a Bad thing. bad thing. I mean, no shit, right? I mean, globally, if everyone's trying to send their film, why should you be? And getting notice is also your job. Na? Matlab, we Yeah. can't complain to YouTube कि हाँ हमारे इतने likes नहीं है या हमारे views नहीं है because हम लोग अरे thumbnail but तो हम लोग think को about बनाना this चाहिए. ना. That's not on Abhi, but think about this. Sikha Yeah. Entertainment. I saw this on Instagram. Hmm. They hired like a theater in like America somewhere. They showcased the movie, their film, to all the Oscar jury ek sath. They screened it for the Oscar people. I don't think All That Breathes got that opportunity to do that, na. All That Because- Breathes took the harsher route of the film festival. And then it reached the same place, but I don't think the jury saw, because the jury, I don't know, I can't judge, I don't know, but the jury together saw this one, right? Elephant. Elephant Whisperers. So I Yeah. think even there, like if you're pointing ki it's on new, like Shaunak Sen couldn't. नहीं मैं Wouldn't उसकी be बात able नहीं to- कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं that कह रहा in हूँ general- उनकी गलती नहीं है ना कि हाँ. एलिफेंट विस्परर्स ने तो सही काम किया ना. मैं जो Correct. अपनी फिल्म पहुंचानी है ना, जिताना है कि नहीं जिताना, तो वो तो वही करेंगे जो चलता है. So that's what I'm saying. I'm not saying it's All That Breathes ka fault to have not done that. Ah. I'm saying but it is definitely a plus and it shows that you care about your film. Also, Right. by the way, kudos to Guneet Monga, because she's a second-time Oscar winner. Yeah. She has won with that period end of sentence film, which also I did not like, but she did. Which, हाँ वो भाई वो film भी बहुत ही, it has the same style, which is like this very basic first thought. My God. Anyway, point being, Huh. it fucking won, right? So I'm sure she's doing something right and great about that. Yeah. Though I will say, I don't know if I should say this at all, but I found one of the funniest things at this Oscar. So till I think about till before the pandemic, I would say 29 or even before that, 2018 तक something तक, मैं Oscar रोज मैं सुबह उठ के देखता था. ठीक है. मैं उठ जाता था सुबह और मैं देखता था प्रॉपर्ली. मैं तभी से छोड़ दिया honestly. मैं I think the Moonlight and La La Land वाला year कौन सा था? I think no, that year 2016 या 17. 18. हाँ 18 होगा फिर. हाँ तो मैं तभी से छोड़ दिया. तो the thing is, I didn't really watch the Oscars. I just watched the news. I woke up late and then I watched the news and I saw like this one clip on Instagram by a film critic who was there. And now see, Oscars there are limited passes, but there was a film critic from India who had gone there. Oh, right. And she was like, she pointed the camera at herself and she was celebrating the win. And like without showing the win. Yeah. So I'm like, so that means you set up the camera and then you do like a whole recording of you like basically doing this. So I just found that to be very funny. It's like Bharat, अगर तू जैसे तू फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुआ था, अगर मैं फिल्म फेयर पे आता और मैं अपने ऊपर कैमरा रखता और फिर मैं ऐसे करने लग जाता if you win. Actually, I was, in that clip now that you're talking about, I was waiting for her to turn the camera towards. That's what I thought. It'll be like cool. It remained on her. मैं नाम नहीं ले रहा because it's fucking pointless to hate on anybody in general. But and we won't recommend that any of you will say any of this shit. But in general, I just thought that was that is what, to me it feels like it becomes a bigger sort of PR thing because it's like you're getting people along with you. You're like, अच्छा एक और चीज मुझे थोड़ी फनी लगी कि फिल्म क्रिटिक कैसे जाता है यार? हाउ कैन अ फिल्म क्रिटिक जॉइन यू ऑन? मैं उस बात पे नहीं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ बात से. मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जब जीते, अगेन मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट दिस, बट ये लोग जब जीते ना तो दे सेड दैट वी आर द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्शन टू विन. बट दैट दे आर, मतलब बाय 5 मिनट्स, राइट? क्योंकि उसके बाद तो आरआरआर आल्सो they are the first Indian production by 5, 10, 15 minutes. So and I think RRR उसके पहले तो नहीं जीता, मुझे मालूम नहीं, मैं देखा नहीं, but I think वो 5-10 मिनट की अच्छी विक्ट्री थी. Anyway, वैसे इंडिया में ऐसा कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट मतलब नहीं जीता कि कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ पहले नहीं हुआ था क्या? लेकिन लगान Nothing. नॉमिनेट हुआ था लोगों मुझे को याद है. लग
लोगों को मिला है, सत्यजीत रे को मिला है, भानु अथैया को मिला है। गुलजार को मिला है आई थिंक। बट प्रोजेक्ट को नहीं। गुलजार को मिला है ना? गुलजार को क्यों मिलेगा? अच्छा मिला है। नहीं मिलना चाहिए फिर। मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। मैंने कई बार तो पढ़ा था कि गुलजार को मिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पर शायद वो फिल्म फेयर होगा या स्टार स्क्रीन अवार्ड्स होगा शायद। स्क्रीन अवार्ड भाई। तो हाँ एनीवे, yeah. So yeah, Star in all परिवार। in all like also no shade thrown on any film critic. I just thought it's the equivalent of, you know, you take a matlab yaar, how can you take the person who criticize, matlab who's, there's a church and state thing, right, where you're like it's like if say like Modi, they're saying to nominate for Nobel Peace Prize, say Nobel, Modi wins it, and then Navika or like Arnab are there celebrating. It's just like, you're the film critic, you know, you can celebrate it, but on your own time and time. So- अच्छा, Gulzar wrote the lyrics for Slumdog Millionaire and So, Jai Ho. but did he win the Oscar for that? The अब song won ना? हाँ, तो the सॉन्ग में song won. लिरिसिस्ट भी जीतता है ना Seriously? वो। इसमें जो दो बंदे अच्छा अभी नाटू नाटू पे आते हैं, नाटू नाटू वन, which we had predicted the नाटू नाटू will for sure win. भाई नाटू नाटू का win So- in my opinion is deserved. Yeah. तुमने बाकी गाने सुने हैं? और उनका पिक्चराइजेशन देखा है? मैंने देखा है क्योंकि हाँ. उसने नॉमिनेशन की लिस्ट डाली तो मैं कहा यार चलो देखते हैं बाकी क्या है। एक में जैकलिन फर्नांडिस है, ठीक है। हाँ, genuinely not even kidding. Sorry, in I in saw the, parts of it online. बता why कैसा didn't लगा? she, Talk like a woman, behave like a woman, dance like some movie like that. पार्च की डायरेक्टर ने बनाई वो फिल्म आई थिंक, एंड इट्स आई थिंक इट्स एन एंथोलॉजी। जैकलिन नहीं गई क्या ऑस्कर सेरेमनी? अटेंड नहीं किया उसने? यार थोड़ा AD का problem है। मेरे को ये अजीब लगा कि दीपिका पादुकोण got to present, I mean I guess because she's some brand का ambassador or something, but she got to present the Oscar. Alia Bhatt is in the movie, she did not come for the Oscar. I'm like अजय देवगन किधर है? मतलब हाँ ना, मुझे अजय ऑस्कर क्यों नहीं गया? because अजय I'll देवगन tell को you जाना why. था। Because Oscars are the best place for अजय देवगन की कारपेट रेड होता है ना, तो वो थूक सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने चेंज कर दी कारपेट इस साल वाइट था। इस साल व्हाइट कारपेट था, इसीलिए नहीं गया। हाँ, इसलिए नहीं गया हाँ, अजय शायद देवगन। इसलिए फिर गंदा लगेगा कॉन्ट्रास्ट ना भी ज्यादा हो इसके लिए। जाता ना उसकी एक स्किन। ऐसा पान का पिचकारी आएगा, गलत लगेगा वो। सही बात है। But yeah, I was wondering why Alia Bhatt did not show up. I mean, Yes, should have or like all of these people who worked on RRR and all of those things. Though, by the way, you know, people were criticizing, which I thought was really unfair criticism on like Elephant Whisperers also. Not unfair entirely, but like I would say ki, why didn't you take the guys who you've represented in the movie, you know, to the Oscars and all that? And ek to they said you didn't mention them, but apparently मैंने वापस देखा they had mentioned. नहीं, so okay, so here's the controversy हुई थी। हाँ. कार्तिकी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेंशन किया था, right? Correct, yeah. But when this one, so दो कंट्रोवर्सी हुई, राइट? एक तो ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ 40 सेकंड दिए इनको बोलने के लिए, and then they played the music, so Guneet could not make her speech. Then when they gave the next award to animated short film, they gave a longer time duration for the people to speak, who were two white guys basically. Oh yeah, that's really fucked up. So they were saying that मतलब बहुत प्रॉपर इसमें इशू था लोगों को कि भाई तुमने मतलब बिकॉज देयर इंडियंस तुमने उनको बोलने नहीं दिया। सो ये एक कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी है मिनी कंट्रोवर्सी जो इंडियंस को मतलब कैसे लाइक क्रैब्स एनीवे। तो बेसिकली उसने बोला, गुनीत मोंगा ने अपनी स्पीच दी, उसमें शी थैंक्ड एवरीबडी फ्रॉम लाइक हर फैमिली एंड एवरीबडी लाइक एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ द फिल्म। So people were pointing out कि भाई तुमने Yeah, but you know what? I also मुझे भी शुरू में I read that criticism and शुरू में को weird लगा. But then if you just think from that person's perspective for a second. Okay? They've just won an Oscar. They're not thinking right. Maybe they're elated. They're excited and happy naturally. So it's okay. मतलब हो जाता है. It's like you're not. Also, you've been played off the stage, which was really mean. I thought, and I think एक तो ये चीज ऑस्कर का मेरे को ये जो प्लेइंग ऑफ द स्टेज वाला सीन है ना, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। मेरे को जिमी किमेल के हग्गू जोक्स नहीं सुनने हैं। जिमी किमेल इज द साहिल शाह of Hollywood, dude, like, or Abhishek, whatever. Like he's not a funny dude. Like why do we have to? Can we cut all his humor and all his gags and give the people who are here to win time to talk? I mean, come on.
That's really भाई मैंने थोड़ा सा सेरेमनी आधे से देखी थी. तो भाई कोकेन बियर वाला तुम लोग देखना अगर तुम्हें टाइम रहे मैं कभी. नहीं देखा. क्या था, क्या हुआ था? It's such a cringe segment ना. Basically, the director of the film, I think Elizabeth Banks, right? Hmm. She was on stage to present some award. तो पीछे से कोकेन बियर आ जाता है. Oh wow. And then she's like, whatever she's saying, the cocaine beer is enacting it. And it gets really, really cringy after like 2 seconds. उसने कुछ तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, कुछ तो मलाला के साथ भी कुछ जोक मलाला के साथ आ गया वो. भाई मतलब दूर रखो यार इसको कॉमेडी से. जिमी किमल क्या किया, क्या बोला, क्या उसने उसको वैसे? अबे कुछ नहीं, उससे बकवास क्वेश्चन पूछा कि you are all, you know, you won the Nobel, you're the youngest person to win the Nobel Peace Prize. So what do you think about, अब वो कौन सा कंट्रोवर्सी हुआ था वो फिल्म का कि उसने थूक दिया था किसी पे. हैरी Harry स्टाइल्स. Styles, हाँ, Chris so Pine. what do you think about ये क्या है ये? मुझे भी नहीं भाई- पता है क्या. भाई मुझे नहीं पता, मलाला को कैसा पता रहेगा? नहीं तो वही पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैरी स्टाइल्स स्पिटिंग ऑन क्रिस पाइन. तो कहती है आई ओनली स्पीक अबाउट पीस. सो दैट वाज That's a good answer ना. मुझे तो ठीक दैट्स अ लगा गुड स्मार्ट Yeah, आंसर that's इन a दैट. great answer. Yeah. Dude, I mean, she's taken on the fucking Taliban, dude. I think she can handle Jimmy Kimmel's shit humor and come She back got- with some. she Harkirat got- said, why was Malala at the Oscars? She had produced a short. She had produced a documentary short only, no? And about no, the documentary ka subject was her. नहीं. No, it's something else. Oh, is it? Yeah, About she's someone produced else. it. मतलब Okay, she's then produced a I'm fine. random documentary. But she और उसको हराया ना, मलाला को हराया ना इन लोगों ने. हरा के कैसा लगा इनको? India beat Pakistan again. India beats Pakistan. In your face, Pakistan. यार अजय होता है ना, अजय देवगन होता है ना वहाँ अजय पे, पागल हो जाता मजा आ है भाई. जाता है, वो पागल हो जाता है. मलाला को आके सिंघम का डायलॉग सुनाता मेरे को कि कायदे में बोलो जुबान केसरी. बोलो अरे जुबान नहीं, व्हाट इज दैट सॉन्ग फ्रॉम दैट मूवी, भगत सिंह का सबसे, रंग दे बसंती चोला. हाँ, अच्छा मुझे लगा पगड़ी संभाल. हिजाब सो. Oh, dude. Gone a little overboard today, I feel. उसको बोलेगा गोली मार भेज. ओके खत्म भारत, खत्म प्लीज. Okay then. Oh. All of these comments are made by Bharat. Let's discontent as a whole is not liable for any legal or moral outrage. So yeah, individuals are. So Bharat ko aap log, you can get in touch with Bharat personally if you have issues with his humor. I can't get over this. चलो अच्छा होगा नॉमिनेट नहीं होता ऑस्कर के लिए इस बार. इसी वीडियो को लेके ना घर वापसी नॉमिनेट नहीं होगा ऑस्कर के लिए, देख लेना. हाँ, जिस दिन भरत का कोई स्क्रीन प्ले आएगा ना ऑस्कर में, उस दिन लोग ये क्लिप निकाल के वायरल करेंगे कि देखो ये कैसे बात करता था. These are the Indian crabs who pull each other down in this film industry. Very true. पढ़नी चाहिए भरत को. Number one bullshit. Shashwat is here and he has said अच्छा हुआ AR रहमान फिर से नहीं जीता, साबित हो गया कि वो ओवररेटेड है. कुछ भी. दूसरा बार जीतना चाहिए था ना, तभी तो प्रूव करेगा कि वो नहीं था. It wasn't AR the- रहमान का जय हो is like मतलब out of all his songs is in the bottom 5 for sure for me. Like जय हो मैं कभी नहीं सुना है मैंने I except can't for tell which one is worse. Okay, जय हो का म्यूजिक कि जय हो का म्यूजिक वीडियो. भाई तुम लोगों ने जय हो का म्यूजिक वीडियो तो कुछ और ही है. हाँ चर्चगेट पे होता है आता ना. है. हाँ, वो लोग क्या Right. डांस कर रहे हैं, वो तो लगता भी नहीं है कि मतलब it has got anything to do with how Indian movie. It's like somebody just woke up in some other part of the country or other part of the world, did not see any Bollywood movie before, and decided they'll make a Bollywood song. इंडिया में क्या, बॉम्बे में क्या होता है, लोकल ट्रेन और बॉलीवुड डांस दोनों डाल दो. भाई जय हो मैंने कभी मतलब it's a pretty shit song. मतलब shit मतलब in terms of what AR रहमान is capable of and what we've seen of him, Yeah. उसमें तो मेरे को काफी खराब ही लगता है. Anyway. But मैंने बोला था फेबल्समैन नहीं जीतेगा, भरत याद है. हाँ तू बोला था शायद यार. But I think I know why. I think I know why which films win, and it's nothing to do with the movie ka quality. हाँ, It's nothing to do with what is if it? the movie is good or bad. It's only to do with the movie ka back story.
and the context कि हाँ, the अभी क्या context. चल रहा है लाइफ में, मतलब हाँ, वो how did this movie come about? Like the story की, Brandon Fraser का comeback movie. हाँ Now the correct comeback movie makes it मतलब an the Oscar. narrative around the film, you mean? correct Yeah, like nothing to do with the actual movie. मिशेल यो ने क्या डरा के रख दिया था भाई पूरी अकेडमी को कि भाई देखो हाँ, मुझे नहीं दिया ना तो फिर देख लो तुम लोग क्या होगा But आगे यार, आके तुम मिशेल लोग यो की responsible। परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी यार, कम ऑन. हाँ नहीं, नहीं अच्छी मुझे मूवी है, मुझे बहुत कोई अच्छी प्रॉब्लम मूवी है. नहीं उसके मैं खाली बोल रहा हूँ कि क्या हुआ है मतलब ठीक है मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मिलना चाहिए कि नहीं मतलब इन टर्म्स ऑफ हाँ, I get it. I get what you're saying. नैरेटिव दैट यू देख अगर वो लोग 100 दिन से कैंपेन कर रहे हैं कि फर्स्ट एशियन विक्ट्री वो सब तो फिर अभी नहीं दिया तो फिर तो नहीं फिर अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को भी तो बट यार टार तो मैं पागल हो गया देख के, जो हिमांशु ने, मुझे याद आ गया हिमांशु ने रिकमेंड किया था. हाँ और जो तूने बात बोली थी अबाउट इट बीइंग अ माइकल हैनेके काइंड ऑफ शूटिंग स्टाइल, इट्स वेरी ट्रू डूड. इट्स रियली गुड. Kanna, you should really watch it. I think I'll go again. मतलब not go again, I'll watch it again. क्योंकि यार मैंने टार के लिए भी बोला था, बट फिर मैंने वेल के लिए भी बोला था. तो तुमने वेल देखा है क्या? मैंने बोला नहीं था यार, इट्स सिमिलर टू अमोर. वेल नहीं देखी मैंने यार, नहीं देखनी. देखी. आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट वेल, लाइक नॉट लाइक अ स्पॉइलर रिव्यू एट is सम it पॉइंट. is it called whale because he's No, it's not. It's not. it's I'll tell you not why. okay Oh, I thought it was that. His मुझे भी वही daughter. लगा yeah It's about him and his daughter's relationship, which has deteriorated. And when she was a kid, she wrote an essay on the Moby Dick, that novel, where ah right where he keeps the captain keeps going after the whale, Yeah. and then yeah that guy, because he's on almost on his deathbed, he keeps reading that essay. He's obsessed with it. This is the first 2-3 minutes of the movie में ये establish हो जाता है. Okay. That's why it's the whale. And there's a reason. The essay में the way she as a kid explained the novel is why he is obsessed with the term the whale. It's nothing to do with him being fat. Okay. So watch it. एक बार तो देख लो. नाइस हाँ मतलब काफी कुछ देखना बाकी है इस साल ऑस्कर्स का मैंने काफी कुछ भाई तो All Quiet on the Banshees Western Front हाँ बहुत अच्छी मूवी है. All Quiet on the हाँ. Western Front. एक हाँ. पहले वाली कौन सी थी ऑल क्वाइट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट था ना वही वो था, अबे वेस्टर्न नहीं फ्रंट ही था. वो भी Same. वेस्टर्न ही था वो हमने कॉलेज में देखी थी हाँ. नहीं भाई. हाँ नहीं भाई. ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई देखी थी कॉलेज में भाई अबे दोनों. मिक्स अप मत करो यार, तुम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हो. All Quiet on the Western Front से पहले ईस्ट ऑफ ईडन मस्त थी All Quiet on the Eastern Front था क्या वो? अबे जो हवाई वेस्टर्न में फ्रंट बेस्ड था. था. वेस्टर्न था कि सेम नाम था क्या? सेम भाई नाम मैं है दोनों अभी मूवी. Same नाम. मैं अभी डैन कार्लिन का हार्डकोर हिस्ट्री में गोस्ट ऑफ द ऑस्ट फ्रंट पढ़ रहा हूँ ऑस्ट फ्रंट इन जर्मन इज ईस्टर्न फ्रंट एंड पढ़ रहा मतलब सुन रहा हूँ और वो इट्स अबाउट द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द वॉर और वो पूरा पॉडकास्ट ही इसके बारे में है कि हाउ द वेस्टर्न फ्रंट वाज बुलशिट एंड ईस्टर्न फ्रंट पे असली लड़ाई हो रही थी तो अब मेरा मन नहीं कर रहा देखने का मैं देखूंगा भाई बोलूंगा कि यार ये क्या मिड वॉर है ऐसा नहीं है यार. अरे तुम लोगों ने मजाक कर 1917 रहा हूँ देखा? भाई हाँ देखा So 19 this वो. is very similar to 1917. अच्छा, हम्म 1917. हाँ. हाँ, it's almost the same बाय द movie, वे but I think it's काफी a little लोगों ने better. कहा है और मैं बहुत भारी अग्री करता हूँ इन सबसे हर किरत ने कहा है किसी और ने कहा है हाँ खादर ने कहा है बैंशी शुड हैव वन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ना 100% अग्री भाई वो मतलब दैट स्क्रीन प्ले वाज पिच परफेक्ट आई थिंक मार्टिन मैकडोना को अभी बाय डिफॉल्ट दे देना चाहिए नॉर्मली पर उसको नहीं मिला मार्टिन को मिला नहीं है क्या कुछ? आई डोंट नो इन ब्रूज के लिए मिला ही रहेगा ना? नहीं. इन ब्रूज है नहीं देख उसमें ही वाज नॉमिनेटेड अ लॉट अरे जीता है भाई उसके लिए. हाँ हाँ. फ्रांसिस मैकडोनल्ड के लिए जीता है. करेक्ट वो रोड कह रहे Three All boards outside Three- Ebbing, Missouri. या आउटसाइड एबिंग जीती मिजोरी है. करेक्ट And ironically, it's not even his greatest. Ironically, It's because- not. Yeah. इट्स नॉट आई थिंक हिज आई डोंट नो एक्चुअली इन ब्रूज है सेवन साइकोपैथ्स Seven थ्री Psychopaths. बिलबोर्ड्स और ये वाली बैंशीज आई डोंट नो मैन आई थिंक ऑल हिज सिनेमा इज I genuinely, maybe this is recency bias, but मुझे Banshees सबसे अच्छी लगती है. Maybe it's the recency bias. मैंने बहुत रिसेंटली दोनों बैंशीज और ये देखी है In इन ब्रूज मैंने वापस देखी थी मैंने बैंशीज के बाद वापस से आके इन ब्रूज दिखाई थी किसी को और उनके बाद देख रहा था तो पर मैं ना थोड़ा कंफ्यूज मतलब कन्फ्लिक्टेड हूँ बिटवीन टार एंड टार को नॉमिनेट भी नहीं हुई ना शायद बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए. हुई है देखना पड़ेगा. आई थिंक हुई है, बट टार मेरे लिए इज प्रोबेबली बेटर देन Banshees
as a film overall, I feel personally. So yeah, मेरे को Triangle of तुमने देखी है ना? तूने देखी है? हाँ मैंने देखा है. Do you think it matches up to these kind of films, or is it worse or better or equal? I feel like I feel like the problem is comedy movies don't get taken seriously, and it's proven in this kind of a thing. कि अगर Correct. मतलब even though everything everywhere is funny, I get it, but it had to rely on a lot of other factors for it to get there. Everything everywhere seems like a sketch, like वो sketches आते हैं ना जो Rick and Morty sketch, right? उसमें रिक एंड मॉर्टी के बहुत सारे स्केचेस एक्चुअली हैं. But I still feel So- it's not as like it's मतलब ये लोग उसको discredit करने के लिए कहते हैं कि भाई रिक एंड मॉर्टी एपिसोड वो ठीक है, I get it, but it's still I don't think so. It's a good, it's a decent, well made movie. yeah. I think comedy है बोल के ना people like love to shit on it. I think Yeah. the same with Triangle of Sadness में भी यही है. It's funnier. It's on the funnier हाँ. side. So people don't care for it. They'll give more importance to like a Tar or which other movie, The हाँ. Whale. These movies will get more like push in थोड़ा general. रोना पसंद है एकेडमी को. How would ऐसे you rate this शाश्वत Oscars? आए भाई देखना पड़ता है ठीक है रेट करने के लिए, पर मैं नहीं, not the ceremony, like the अच्छा award. यार मैंने देखी भी नहीं ना ज्यादातर, मैंने 2-3 देखी, पर मैं रेट करूंगा 5/10 क्योंकि ऐसे इन हरामियों ने उसको दी ठीक है. इन हरामियों ने उसको ना होगा पाक चैन वूक कली फिल्म को यार भाई उसको Decision to nominate Leave. डिसीजन टू लीव को कोई नॉमिनेशन नहीं मिला, तो Decision to ऑल Leave- दैट ब्रीड्स को विन नहीं मिला. जॉयलैंड जो मैंने देखी नहीं है पर मुझे बोला गया कि नॉमिनेट भाई, होनी चाहिए थी, उसको Joyland. नॉमिनेशन नहीं मिला. Joyland should definitely would have been nominated, but पता नहीं. It's very unique. Like it's a very unique film. हाँ. मैंने हर genuinely- कीरत बोल रहा है विल स्मिथ को काफी मिस किया है इस ऑस्कर में. नंबर 1 बुलशिट पॉडकास्ट हैज सेड लिली सिंह को रेड कार्पेट पे देख के कुछ लोग अपना ऑस्कर बिना लिए ही वो लौट गए. भाई वही है, मेरे को पता नहीं जो भी जिन लोग को भी ये वाले काम मिलते हैं ना ऑस्कर वाले टाइप्स. क्रिस रॉक आल्सो आई हैवंट फाउंड हिम फनी लाइक लेटली, और जिमी किमिल करते रहता है अगेन एंड अगेन. फिर ये लिली सिंह, एवरीबॉडी हु वर्क्स ऑन दीस थिंग्स, मतलब मेरे को सामने नहीं आता कि I think हमने ना बाकी ज्यादा सब ही लोग मना criticize कर कर- देते हैं. हमने ना ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया इन लोगों को. I know this now सही this is a बात है, hot take. हमारी गलती है. हाँ नहीं क्योंकि अब क्या है ना जोक्स लेम हो गए. अब क्या है ना वो लोग चूज कर रहे हैं कि होस्ट होना चाहिए कोई एकदम ही यूजलेस इंसान ताकि हाँ, हम जिसको लोग ना ही थप्पड़ तो ना हंसे. पड़े कम से कम, ठीक है, हाँ जिसको कोई बस- स्टेज ऑडियंस से आगे लपड़ हाँ नहीं लोग लगे. सो जाए चलेगा. हाँ. सोने दो सबको क्योंकि हमें पता है लोग देखने ही वाले हैं, तो अब बकवास ही करो. डोंट मेक इट इवन रिमोटली फनी हाँ. so that let's just get over with the whole. Ricky Gervais was the peak, I think. वो गोल्डन ग्लोब्स, वो ऑस्कर कभी हाँ लिया वो नहीं. ऑस्कर कभी नहीं गया. Oscar आ ही नहीं हाँ. सकता. गोल्डन ग्लोब 4 बार किया उसने. हाँ उसको नहीं देंगे यार, ऑस्कर तो नहीं देंगे उसको. वो मूवीज थोड़ी बनाता है. अभी तो देना भी नहीं चाहिए. आई थिंक अभी थोड़ा सा हो गया मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी. आई डोंट नो. हाँ एनीवे बाय द Last of Us. हाँ लास्ट ऑफ अस की बात करनी, हमने लीजो की बात नहीं की और हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा समय समाप्त होने, दूसरा एपिसोड इन अ रो जहाँ हम लोग लीजो की बात करने भाई मैं वाले थे. सही बोल रहा हूँ कि we should do single. मैं तुम लोग को यही बोल रहा था. Do अच्छा. single. ये 3 चीजों के बारे में बात नहीं हो पाती क्योंकि बात मतलब चलती रहती है. Anyway. हाँ तो ठीक है, तो लास्ट ऑफ अस की बात करनी है, फिर भी ऑस्कर की बात हो गई और उसकी बात हो गई. तो I think we should do it on some other episode. क्योंकि एक बार लोगों को खत्म करने दो तो फिर एक let- स्पॉइलर लेट दिस बी ऑस्कर एपिसोड. तो मैं टाइटल चेंज कर दूंगा इसके बाद, कोई बात हाँ. नहीं. आई होप कि 32 पीपल और वाचिंग बुरा नहीं मानेंगे कि हमने आपसे झूठ बोला, पर बुरा मान लिया तो आप लोग जाके क्या कर सकते हो, कुछ इम्प्रोवाइज करो. मैं अकेले सारे काम करूं इधर. कमेंट्स देख रहा हूं मैं. देखने वाले हैं, कोई नहीं देखता भाई, शौर्य पाठक ने बोला है. अरे कोई मूवी ऐसा बताओ जो ऑस्कर में था नॉमिनेटेड था जो हमने देखा नहीं है. लाइक आई वुड वांट टू नो व्हिच वंस आर द गुड वंस क्योंकि a lot of them are- फेबलमैन्स. नहीं वो तो देख लिया मैंने. उसके अलावा मेरे बताओ. को ये रोनित जो बता रहा था टू लेस्ली या फॉर लेस्ली वो देखनी है. The one, it's actually an indie film. I feel कि American indie films ज्यादा हिंदी recognize होते हैं. नहीं recognize नहीं होते. जैसे Moonlight हुई थी I think last
which was like a which won an Oscar. But और कौन सी indie movie है वेंचर अमेरिकन? Bhai, actually, I'll tell you what, even not even just indie, but just generally what, looping this in with what Himanshu was saying, कि any kind of movie which is a little bit, कि थोड़ी सी little goofy or a little funky in that sense, where it's not a straight up drama or a straight up like life lesson or some biopic. Yeah. Those kind of films don't normally have a shot. I think Everything Everywhere All at Once winning might change things in that sense a little bit. Like, for example, Good Time को nomination नहीं मिला था. Good Time को कुछ भी nomination नहीं मिला Uncut था. Gem उसके को भी नहीं Uncut मिला. Gems को भी कुछ भी नहीं मिला था. Even though I would say Adam Sandler was the best actor that year in Yeah. that role. So I think वो सब, I think a film like this would or should change things. What do you guys think of the whole diversity angle with the Oscars in general? बताओ, Well, मतलब हंस क्या अच्छा, रहे हो, so बताओ. I'll Let's tell get you. it. अच्छा, I'll not answer your question, हाँ. but I'll tell you why I think Everything Everywhere All at Once is considered a little above just a normal comedy. Hmm. And I think it's a lot to do with the directors and their previous body of work, like their body of work. They made The Swiss Army Man, right? And before that, they made all those music videos. You guys have seen those, right? I've not Turn seen. Down for What? हाँ, right, they made that. Turn Down for What तो The देखा ही होगा. legendary music video. Ah, देखा है, तूने oh, देखा है, I'm sure. And if you recognize, it's like all of them fall into a very similar kind of a comedy. And I think it's genre bending or genre defying comedy. Like it's like different from anything anyone else has done yet. It doesn't feel like other people do this. So such comedy would have been looked down upon. It's like YouTube comedy, but they have perfected it and then pushed it forward, right? With this movie. So Hmm. that's why I think this is a special movie. It changes the way films will be made from now on. मुझे ऐसा लगता है जब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आई थी तो उसके बाद हर मूवी में the way he made his movies, that's how we made our movies. Like people would make thrillers and they would add that sound effect. I think from now on films will be very similar to like this movie, Everything Everywhere All at Once. Hmm. People will write more like this, I not multiverse necessarily, but like thoda A little goofier. they'll take some liberties with the lighting and editing and music and Right. stuff. And I would appreciate it. I would rather watch some more of this kind of films. I don't know. I don't agree. I'm not sure actually. I feel it's a like those Like are no other director does it yet. मतलब no other directors have done it on this scale yet, right? Yeah. यार मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉट टेक पढ़ा पॉल शेडर के फेसबुक पोस्ट पर, ठीक है, विच इज बेसिकली उसने बोला कि क्यों अमेरिका को पूरी दुनिया का बार उठाना पड़ रहा है, व्हाई द फक डज एनीवन एल्स केयर, लाइक व्हाई ही इज लाइक ऑस्कर्स आर मेंट टू सेलिब्रेट अमेरिकन सिनेमा, वी हैव वन फॉरेन फिल्म कैटेगरी, वो पूरी दुनिया के लिए है, क्यों हमें पूरी दुनिया का लोड लेने की जरूरत है, व्हाई शुड वी ओनली why shouldn't we only celebrate American cinema? And I think it's kind of a fair point, पर मतलब हाँ तो ठीक है. पर वो नहीं है ना, मतलब वो बोल रहा है कि वो नहीं होता, वो एंटी डाइवर्सिटी क्रूसेडर. But I have a feeling कि it is more to do with commerce than anything else. Because the moment you have like a film like RRR or even like Bench, मतलब उनका डांस भी उन्होंने नॉमिनेट करके जिता दिया, तो सारे इंडियन लोग झक मार के देखने आ गए ना. हाँ, करेक्ट. I feel it's a lot to do with money. कि भाई तुम ठीक है, तुम एकदम एक अपना ही secluded kind of American film festival बना के देखो फिर कितना पॉपुलर होता है दुनिया में. बात तो सही है. मतलब पूरा इंडिया चढ़ गया था ना स्टेज पे वो स्लमडॉग के टाइम पर. वही तो स्लम तो ये बेस्ट फिल्म जीती थी. तो मेरा वही पॉइंट है कि I don't think it's a problem. It's a financial thing. हाँ. But it will be a localized award. कोई नहीं देखेगा. मतलब देखेंगे लोग, but not. I think this is also like there is this whole thing of कि in the 90s, we hear of Aishwarya Rai, Sushmita Sen, Priyanka Chopra पता नहीं जीती कि नहीं, but all these people winning Miss World, Miss Universe, all these awards was not apparently, मतलब this is pretty much that it's a marketing thing by cosmetic companies and by these companies to enter those markets. Yeah. Liberalization के बाद they want to enter the Indian market, so they give a bunch of awards to Indian models year after year. So
do you think Oscars also kind of do that a little bit? I think so. I Yeah. have a feeling. I definitely do. Hmm. But हो that's सकता है, लग तो रहा है. क्योंकि अब भाई ऐसे देख, लग रहा है आगे जाके और बॉलीवुड मूवी पहुंचने वाली है. हाँ होगा, 100% होगा. Singham 6. कार्तिक आर्यन आने वाला है वहां पे. वरुण धवन जाएगा यार ऑस्कर पे. तू झूठी मैं ऑस्कर, वैसा टाइप का. तूने देखी क्या है मूवी तू झूठी मैं मक्कार? नहीं, Bro, it's getting a lot of money also, and people are saying it's funny. But Is it a funny film? no, so people who are not critics, so अच्छा like हिमांशु, people तू whom ऐसा I know, बता, like जो क्या तू इन लोगों को रिस्पेक्ट करता है जो लोगों ने बोला उनका सिनेमा यार को मेरे opinion? पेरेंट्स ने देखा है तो मैं अच्छा करता हूँ चलो ओके ओके उनका. सॉरी. उन्होंने बोला बहुत अच्छी मूवी है, जाके देखो. हाँ तो मैंने आई सेड क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने बोला I said why is it funny, and they said नहीं it's second half is damn funny, this that. Then I asked my sister who went with them and she said don't watch. So I got it. But then it's तू क्यों नहीं गया उनके साथ यार? because they were in your city na when they went ओ together. दे वर इन बॉम्बे. Oh, हाँ, I was not there, so हम्म. I was तू in भी Guwahati. आगे गया है क्या हिमांशु? तू ये बहुत बार कर चुका है ना? नहीं, I've not done it. आगे- Last time I came there, I met you guys. नहीं ऐसा अभी तो तू बोलेगा ही ऐसा, बट ठीक है. नहीं आया मैं. I'll meet you, Aditya. हाँ Don't worry. ठीक है कोई बात. भरत तू ये याद रखना ठीक है जो अभी बोल रहा है ना, वरना एयरपोर्ट पे इसको हम लोग कॉल करेंगे कि भाई क्या है मिला नहीं. एनीवे नंबर वन बुलशिट सेड तू झूठी JMM तू झूठी मैं मक्कार इज वेरी फनी. मजा आ गया, which is nice. But You can't tell if he's being sarcastic. I can't tell if he's being sarcastic. Also, Shashwat is a comedian, और there is a bus is in this movie. तो वो ये भी हो सकता है ना कि मतलब अपने जैसे हम लोग की तरह नहीं होते ना सब लोग कि हमारे कॉलेज से कोई जाके ऑस्कर जीता है फिर भी वो मूवी की बुराई करना है. ठीक है, वो हमारे ऐसे हर कोई हमारे ऐसे हरामी नहीं होता. तो वो भी बात है. But yeah, everything said and done about Elephant Whisperers. Obviously, this is a massive deal. हमारे Yeah. कॉलेज पोस्ट करे जा रहा है कि there was some other senior also ना who अबे हाँ, is मेरे part को of the वो Elephant मैंने Whisperers पोस्ट team. के बाद ही मुझे पता चला कि हाँ. that person, I forget the name again. हाँ But 2011 बैच का कोई बंदा है. हाँ, and Garima from our immediate junior batch that they were part of the team and they won the Oscar. So I mean, congratulations. of course, to, it's a huge deal, yaar. yeah. Whatever the fuck we think about the movie, it's a fucking big. Hmm. And Natu Natu winning is also massive for the Telugu music industry. In which case, if anyone wants to bother with that, then you can go ahead. मैं तो वैसे कभी मैंने YouTube म्यूजिक पे आगे नाटू शब्द क्लिक नहीं किए पिछले 6 महीने में, तो पता नहीं शायद एक तो ये जो भी एवरीथिंग एवरीवेयर का जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना लोग, इट साउंड्स लाइक तुषार कपूर का याओ पे ओपिनियन दे ही दो. अब तो ओपिनियन क्या यार, अच्छी फिल्म है, मुझे अच्छी लगी थी, मुझे लगा फनी थी. इट वाज अ नाइस इमोशनल फैमिली ड्रामा विद सम फन सरियल एलिमेंट्स. अब तो ना ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छी थी लेकिन पता नहीं ऑस्कर नहीं जीता, क्योंकि अब कुछ भी जीत रहा है ना ऑस्कर. हाँ. तो यू कांट से दैट. तू क्यों नहीं जीतनी चाहिए थी भाई? हाँ. जब मतलब ग्रीन बुक जीत गई तो कुछ भी जीत सकता है. ग्रीन बुक तो बहुत ही घटिया. ग्रीन बुक मैं देखी हुई थी, पता है, again, मैंने मैंने नहीं देखी. 70% देखी हुई मूवी. कैसी है? बहुत खराब है यार, बहुत बेसिक ऑस्कर बेट टाइप मूवी, बहुत खराब. तो मेरा पॉइंट है कि बस मतलब जब तुम व्हेन गुड फिल्म्स विनिंग द ऑस्कर इज अ रेयरिटी, तो फिर तुम किस हक से कह सकते हो कि भाई ईआओ को नहीं जीतना चाहिए था? तो हाँ भाई, डांसेस विद वुल्व्स जीत गई थी गुडफेलस के अगेंस्ट ना, बाय द वे. गुडफेलस व्हिच इज लाइक अ फकिंग फिल्म स्कूल इन इटसेल्फ Also, practically. यार ये एक अगेंस्ट वाली बात क्या है ना, आई फंडामेंटली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यू कैन नेवर टेल इन रेट्रोस्पेक्ट कि कौन सी फिल्म जाके ग्रेट होने वाली है. ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता टार को जीतना चाहिए, इसको नहीं जीतना चाहिए भाई, ठीक है, वो तुम्हारी ओपिनियन है, हो सकता है 50 साल बाद एनीवे टार को अभी भी लोग प्रॉब्लमेटिक कह रहे हैं भाई. करेक्ट. तो if you Aditya, if you see the movie you'll get what like it's a little, it's supposed to be about cancel culture और ये सब ना. yeah, so अरे बट भाई प्रॉब्लमेटिक मतलब क्या है मुझे समझा. न्यूयॉर्कर वाले रिव्यूअर ने मतलब फक कर दिया उसके साथ, क्योंकि उसने बोला कि दिस इज लाइक sympathizing with the abuser. It's I haven't seen, so हाँ भाई, तो मतलब just read, I mean watch the movie and then वो रिचर्ड ब्रोडी का रिव्यू पढ़ना, मेरे को तो बहुत ही खराब लगा वो रिव्यू. Yeah, but I don't think the movie sympathizes. Even Like I didn't sympathize with
It's the same as watching Goodfellas and saying अरे ये तो gangsters को promote करते. It's the same view. हाँ. Yeah, it's the same. ऐसे view. लोगों को सुनना ही क्यों है? साइड हटाओ. और Wait, this one. Yeah, हाँ. read it out. तू पढ़ ले. नहीं भाई. नहीं, you read it out. नहीं पहले आप प्लीज सर. TJMM over Elephant Whisperers any day. भाई शाश्वत again. Number one bullshit. भाई शाश्वत, please also tell us when is the next episode of Number One Bullshit podcast coming, because I'm waiting very badly. यहाँ 40 लोग देख रहे हैं. पहले 12 लोग देख रहे थे, तभी हमने सारी बात खत्म कर ली. और अब 40 लोग हैं. So anyway, we wanted to discuss Last of Us and we wanted to discuss Lee Jo's new film and Lee Jo's filmography in general. पर time है नहीं. तो let's just, are there any recommendations, and then we can end the episode. Recommendations ना. एक second. I was watching something on YouTube. हाँ. यार एक बंदा है bald and bankrupt. वो ना. Okay. He's on YouTube. Us. भाई us. As भाई us. So bald and bankrupt जो है एक बंदा है. He's a UK guy and he has this very sardonic UK sense of humor. And he basically makes a living out of traveling in the Siberian like empty vast lands of Trans-Siberian whatever. तो बहुत ही उसके fun videos रहते हैं because he knows how to speak Russian, like impeccable Russian, and he'll do like random tasks. Like किसी भी Siberian गांव में चला जाएगा, कहेगा मुझे यहाँ beer पीना है, तो he'll ask around, and that way he'll explore the culture of the city and all of that. And it's very, very, in a very weird way, it's very calming because you see these like completely empty roads and completely empty towns and very quaint towns, and you sit down with this guy to have a तुझे drink. शांति चाहिए ना लाइफ में थोड़ा तेरे को. तो मुंबई में रहते हैं ना, तेरे को लगता है यार. So मैं एक्चुअली ना गया था एक बार इटली, and it was non-tourist time, like it was winters, and I went to Turin, which is not like a touristy place. I swear I didn't see anybody there. मैंने गिन के 5 लोगों को देखा. मैंने 2 बार उबर मंगाया. इसलिए हिमांशु 3 बजे सुबह नहीं निकलता बारात को. पर तू कब गया था और क्यों गया था ट्यूरिन? अरे है, मुझे याद है घूमने गया था मैं. तो मैं वहां पे ना सुबह 5 बजे पहुंचा. I ordered a cab. One lady came. She dropped me wherever. In the evening, I ordered a cab again. The same lady came. Oh, एक ही है. शहर में एक ही है. आप देख लो. And she knew me by name only. She's like, अच्छा you only. हाँ, I'm coming. तू अकेला था? नहीं, I was with my sister. So we were traveling around. I went to see this guy यार नीचे जहाँ मरा था ना वो ट्यूरिन में. वो God is Dead वाला. हाँ, God is Dead वाला. I went to the exact place जहाँ पे वो जो घोड़ा मारता है ना, वो मतलब you know the story right? No. He went down like वो अपने घर से नीचे उतरा, थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बंदा था जो एक डेड हॉर्स को ना बीट कर रहा था to pick him up, you know, like a guy. So नीचे just fell onto the horse and said don't beat him or whatever, and then he lost his mind and then he died. किसकी बात हो रही है? नीचे जो भी. Oh, हाँ, correct. So I went to that place. Oh, nice. जहाँ पे वो घोड़ा जहाँ पे. यहाँ पे तू कह रहा है टूरिस्ट नहीं थे. नहीं था टूरिस्ट यहाँ पे. घोड़ा. Shit. नीचे नहीं भाई, ऊपर देखा करो. श्रेय खुराना कह रहा है हाय दोस्तों. श्रेय खुराना कोई भी जानता है उनमें से कोई भी? मैं तो नहीं जानता. अच्छा, तो इतना कैजुअल क्यों हो रहा है भाई? फॉर्मली बात करो, अच्छे ढंग से बात करो. सर बोलो सर. सर बोलो, ठीक है. तो सर. ये तो तेरा क्या था रेकमेंडेशन? बॉल्ड एंड बैंकरप्ट वाज बॉल्ड एंड बैंकरप्ट ऑन YouTube. इट्स फन. भारत का रेकमेंडेशन था और हिमांशु था कि इटली का टिकट लेके इटली घूमने जाओ. ट्यूरिन घूमने जाओ. Oh, that's why the Turin horse. ट्यूरिन, श्राउड There ऑफ is- ट्यूरिन है ना? अरे हाँ, sorry. ट्रोजन हॉर्स है. ट्रोजन हॉर्स है, हर- श्राउड ऑफ ट्यूरिन है. रुक जा ट्यूरिन हॉर्स. भाई तो ड्रिंक पी ले, आई थिंक. Anyway, आगे बोलो. हाँ तेरा मतलब. recommendation दे दे. भाई The Turin Horse is a Hungarian drama film directed by Bela Tar. Oh fuck, sorry. ये भी टार कैंसिल हो जाएगा मूवी. मेरा रिकमेंडेशन है एक 1.5 घंटे का वीडियो है. SWA के YouTube चैनल पे श्रीराम राघवन अपने करियर की बात कर रहा है उसमें. Oh. And he is talking like, so the good thing about that interview is it's like a seminar kind of a thing. और वो
matlab, because SWA Screenwriters Association has done it. So there is another screenwriter who's written Nirja and all these movies. Is interviewing him, and it's done in a way that they're sort of dissecting Raghavan's older movies and talking about scenes and all, and talking about how he took certain decisions. And so it's very, very interesting that way. It's not like a general comment, it's a very deep dive. So if you watched all of his movies, then do watch that. I think it really helped me out, because I matlab, while writing something, this kind of stuff really helps you out. And usne matlab, if you guys Bharat, I wanted to tell you this generally also, because he talks a lot about Agent Vinod and that other film that you really love of his, जो पहली वाली एकदम जॉनी पहले गद्दा नहीं, एक हसीना थी. वाली, एक हसीना थी. या करेक्ट. तो एक हसीना हाँ, तक तो नहीं देखे ना. मैंने अब तक नहीं देखी एक हसीना थी. देखो. हाँ, तो हाँ, these are this is my recommendation. हिमांशु, तूने कुछ दिया रेको? I'm currently reading. So you have suggested the Rebel Sultans. तो मैं वो पढ़ रहा हूँ अभी. उससे पहले I finished with Courtesans, the Mahatma and the Italian Mob. वो वो कैसा भी था भाई? खत्म. कोर्टेसन और ये कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है. book Very easy, हाँ. very easy to read. पढ़ता हूँ Because मैं. it's I like have short essays. I have all of Manu Pillai's books. I just haven't read the last one, जो नई वाली है. भाई सॉरी, एक और And रिकमेंडेशन. सॉरी. हाँ, हाँ, Ivory Throne. Ivory Throne तो सबसे पहले वाली थी. Okay. भाई क्या मैं recommend भी लिख रहा हूँ ना अभी, तो मैं भी रीड कर रहा था ये वाली. अबे यार, ये तो आएगा ही नहीं. रुको, ब्लर हटाने दो मुझे. तेरी चड्डी दिख जाएगी पीछे जो सूख रही है. Sorry, bad joke. दिखा था. एक्चुअली देखिए, क्या चड्डी दिखा? ये पढ़ रहा हूँ मैं फॉर. Oh fuck! भाई ये कहाँ से मिला तुझे? भाई रैंडमली ऐसी किसी मतलब दुकान पे मिल गई. मतलब कौन second सी hand. दुकान पर? अब एक सेकंड हैंड टाइप, मतलब ऐसे जैसे दुलाली कह रहा हूँ, वो लीपिंग विंडोज में शायद मिली है मुझे. Oh fuck! 50 रुपए की. तो आई एम रीडिंग दिस. वेरी भाई, गुड. have you read English August the book? No, I have not read the book. I have read this screenplay before and I'm rereading it because it's kind of inspiring. Dude, that book is insane and it's crazy funny. You have to read it. Even this. Yeah. तो मेरे को ये This दे is देना, funny. तो मेरे से बुक ले लेना. हाँ भाई, बहुत फन है. बहुत फन. अच्छा, I'll get it next. I'll read that. And apparently ये फिल्म पूरी गायब, मतलब जल गई है. मतलब इसका हाँ, कोई कॉपी नहीं correct. बचा. So सिर्फ ये स्क्रीन प्लेस कुछ टुकड़े मिलते हैं बेसिकली. Shashwat, last the comment is my Shashwat's recommendation is full spectrum cannabis oil. And his other thing is Leaping Windows में चटाई भी अच्छी मिलती है, which is true. चटाई अच्छी होती है उधर नीचे, अगर तू जाके बैठेगा Oh हाँ. तो चटाई अच्छी होती है. Also, Ayush Nirula has said Bellator movie है Turin Horse, Aditya Exposed. That's true. मैं Bellator की मूवी नहीं देखता, मेरे पास एक जिंदगी है, तो मैं उसे गवाना नहीं चाहता ऐसी फालतू की बात चीजें करने. That is a Bellator. That. So yeah. Anyway, so with that, we can end this episode, I guess, unless any of you have anything else to say. That's all. Chalo. Good night. Bye bye.